जय जिनेन्द्र सौरभ जी. Yes, Saurabh ji, we know the story about Raksha Bandhan, about 700 Muni and Akampnacharya and Vishnu Kumar, and how he saved 700 Muni from the upsarg which was caused by Bali and the four mantris. And, that day, all Shravaks celebrated it as a Raksha Bandhan. Like they tie Raksha Sutra to each other, and they pray that everybody for everybody's kind of Raksha. And they made kheer because all the Muni from 7 days they were going through that fire, and there was all smoke and everything in their system, like in their body. So for that, kheer is considered a light food. So they make kheer, and they do that. We also do Raksha Bandhan Pujan also. Okay. So what is the importance of Raksha Bandhan in our life? Is it only the Tyohar of brother and sister, or any other meaning of this auspicious occasion? No, Saurabh ji, not just brother and sister. Any sadharmi can tie Raksha Sutra to each other. Like husband can tie to his wife, or we can tie to any other, people in their Mandiji Raksha Sutra. Okay, good. Saurabh ji, what are your views about Raksha Bandhan? जय जिनेन्द्र सौरभ जी. Jai Hind. सौरभ जी, एक विद स्टोरी जो अभी विजल ने बताया अबाउट अकंपनाचार्य एंड विष्णु कुमार मुनिराज. सो फ्रॉम द स्टोरी व्हाट आई हैव लर्नड या व्हाट आई थिंक इज कि हमको हमेशा जैसा हमारे मेरी जो 12 भावना उसमें लास्ट लाइन आती है ना कि चिर रक्षक धर्म हमारा है धर्म हमारा चिर साथी. तो वहाँ तो धर्म हमारा रक्षक बताया जाता है, बट हमको भी जब भी लाइफ में मौका मिलता है या जहाँ भी लगता है तो वी शुड ट्राई टू द रक्षा ऑफ द धर्म. वहाँ मतलब अगेन वी कैन नॉट रियली डू एनीथिंग, बट एटलीस्ट व्यवहार में तो हमको ये रखना चाहिए अपने मन में कि हम मुनिराजों की, हम जनवाणी की, हम धर्म की और स्वयं के धर्म की हमेशा रक्षा करें. तो उस कथा में ऐसा होता है कि मुनिराज की रक्षा की जाती है. विष्णु कुमार जी आते हैं रूप बदलकर अपना सिद्धि रिद्धि से और रक्षा करते हैं. तो हमको भी कभी ऐसा लाइफ में लगे कि वी कैन सेव मुनिराज या सेव जनवाणी एनीवेज, धर्म की रक्षा इज शुड बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, मोस्ट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अवर लाइफ. क्योंकि वो हमारा रक्षक है, वो हमारा साथी है अगर, तो वी शुड डू द सेम फॉर धर्म. Okay. Very good. Saurabh ji has just put here his views, and a good point what he has explained here. Chir rakshak dharma hamara ho, wo dharma hamara chir saathi. Of course, chir means eternal, forever. हमारा धर्म ही रक्षा करने वाला हो और वही हमारा साथी हो. So here today on this occasion of Raksha Bandhan, what we are willing, what we want that only dharma. Dharma doesn't mean rituals. It must be clarified in our mind always that dharma doesn't mean rituals. Dharma it means vastu ka swabhav. Dharma it means the vastu ka swabhav preached by Sarvagdev. So chir rakshak dharma hamara ho, it means only one companion will be permanent, or only one companion who can support us in our every crucial or good or bad moment of our life, which is only dharma.
So it's a very important point what Saurabh ji has just told to us. Kunjan ji. Saurabh, the way I think about it is there's two aspects to it. One from absolute point of view, Nischay I say, or another one is from the conventional point of view from Vyavharnay. When we are saying we will protect the religion, the capability of us to protect the religion from Vyavharnay point of view exists. From निश्चय नय हम किसी को बचा नहीं सकते, but हमारे भाव ऐसे ही हो कि धर्म को कैसे भी हम कंटिन्यू करवाए या कुछ भी ऐसी आपत्ति आए, then we should definitely be standing for the religion. And as Vishnu Kumar did by even giving up the Muni Diksha, that's one kind of a giving up the personal goal for temporarily and then retaking the Muni Diksha. So that's one thing that I kind of learned Okay, from good. this. Kunjan ji has also introduced a new fact, or that there are two points of view, Nischay and Vyavharnay. So no one can save no one from the point of view of Nischay, but from the point of view of Vyavharnay, it is called that we must just have the feeling or sense of protecting our religion, Parinam, Muni, Dharma, Jinvani, etc. So it is not the question we can protect anyone or not. Here, what Raksha Bandhan means, we are just discussing from the point of view of Vyavharnay. But this point also must be remembered in our mind that no one can save anyone. It is the point of view from Vyavharnay, but Nischay, but Vyavharnay says that you must have uh, the realization of a duty, which is to protect your religion, to protect your Parinam, to protect Janmani, to protect Sadharmi. So, Kunjanji, good. You have just told us about from the point of view of Nischay and Vyavharnay. And one more thing I wanted to add was Yeah, currently the Jain religion has lost so much of its identity that people consider all the Hindu mythology and other things as Raksha Bandhan. And again, I would say everybody still follows the brother sister thing of protecting each other and all those things. So that is a one kind of mithyatva that has definitely to go away. you know, day by day, this disease means what we can say disease. It means mithyatva disease. It's entering in the house of or in the families of all Jain community. And I just wonder, no one is capable to stop that. Only one thing which can stop these kind of mithyat, which is swadhyay. So there are very less people, very few people they are willing to do swadhyay, because what is happening, the people, the atmosphere, what they are having surrounding them. So what if they are watching TV? They know that what TV are presenting, TV is presenting. It is a occasion of brother and sister. What in society or from Hindu mythology point of view. So whole Jain community has surrounded by only on these things. That is the reason. In our Jain community also, they consider it as a tewhar of brother and sister. It doesn't mean that brother cannot protect or a brother do not protect his sister. It is duty, the close. There's a girl, so two relations are from birth till death, father and brother. Father and brother, the two relations are the holy and world most protective relations. It means when father says to his daughter, "Oh my daughter, don't worry.
I'm there forever with you. Like brother also says this statement, my sister, it is my duty on this day of Raksha Bandhan. I, I promise you that your whole life, even you just get married, after that, I will be there in your any condition. I will protect you in terms of money, in terms of just the protection. So India is a unique country where brothers are so worried or so caring nature, father and brother so caring nature for whole life for his sister and daughter. It is only you can find in India. But if you think that this is only Raksha Bandhan, it is mithya. What I say that brother, son must just give protection to his mother. Father must give protection to his wife or children. So it is a tewhar of all relations. But remember one thing: the primary why this Raksha Bandhan started. So this story, as you all of you just told about the story, that Vishnu Kumar Munraj protected 700 Munraj. That's why we are celebrating this Raksha Bandhan. So first and foremost duty, what we must remember in our mind is that this is the perv, this is the occasion to protect our religion in terms of studying, in terms of to motivate others to study, in terms of tattva prachar, in terms of attending class, in terms of going temple, in terms of just doing puja, in terms of giving donation. What kind of activities you can do for the welfare of your religion is called Raksha Bandhan. So Raksha Bandhan is not just must be celebrated only one day, but whole year you can celebrate Raksha Bandhan. आप अपने परिणामों की भी रक्षा करते हैं, वो भी रक्षा बंधन में आएगा. आप कोई किसी का मरण हो रहा है साधर्मी का और उसके परिणामों की संभाल करते हैं, वो भी रक्षा बंधन है. आप किसी को शास्त्र भेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो रक्षा बंधन. आप मंदिर जाते हैं, मंदिर की झाड़ू लगाते हैं, मंदिर के बर्तन साफ करते हैं पूजन के, वहां लोगों को साधर्मियों को वात्सल्य करते हैं, वो भी रक्षा बंधन है ना. आप मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं, ये भी रक्षा बंधन है. क्लास की व्यवस्था संभालते हैं, ये भी रक्षा बंधन है. सो दिस इज द डे वेयर वी कैन clarify our mind, and if we are having Jain friends to whom we can explain this point of view of Raksha Bandhan, of course we must explain. Usually I just explain to my many relatives and many my friends by saying that the real definition of Raksha Bandhan. So what my experience so far, they just listen me very carefully, and they're very thankful to me. Oh, Saurabh ji, you have just told me a very good explanation about Raksha Bandhan. We were ignorant about this, but you have told me story, and you have just explained very good way about Raksha Bandhan. So, Priyanka ji, what do you understand by Raksha Bandhan? Yeah, Raksha Bandhan here means, as Kunjanji said, like from 2 points of view, like Nishane, Vyavharne, from Nishane point of view, nobody can save anybody. Like everything is independent, and from Vyavhar point of view, like, I mean, it should be there every time in our mind to protect our own dharma and our sadharmi, to protect our Niraj. Okay. Good. Prerit ji? Yes, so Raksha Bandhan, basically it's a celebration for protecting our religion and our sadharmi. So we just have to do whatever we can to protect everyone.
Okay. Anyone else? Ami Mehta, Dr. Ami Mehta. Would you like to tell something about Raksha Bandhan? Hmm. So that's all for Raksha Bandhan. Adarsh ji is there. Dr. Adarsh, would you like to tell about Raksha Bandhan? Yeah, Jai Jinendra Saurabh ji. I do know that there is some Jain significance about how Raksha Bandhan started. There were some Muni Maharaj. I mean, I have seen the video, so I do remember there is some Jain significance, but I'll have to refresh my memory for that again. Okay. So what is the importance of Raksha Bandhan? How we can just celebrate it? By vowing to protect, for example, like the brother sister, they have that bond, so the brother vows to protect the sister in any situation and any circumstance, by standing whenever she needs him. Okay, so we can consider it is only the festival of brother and sister, or No, it's a humanity. I mean, essentially we'll have to apply it to the humanity. okay, so we can protect each other in the. It means family, sadharmi. We can protect. Correct. Correct. Yeah, sister can protect sister, brother can protect sister, everyone. Yeah. You know, one thing what I usually tell to all that it is not mandatory that brother can also save or brother can also protect his sister, but in today's scenario, sisters are very intelligent and they are also capable, so they can also sister also can protect her brother in terms of not in terms of money, but in girls and in Jain community they are very intelligent, they are very religious. So even if sister explain about Jain religion to his brother, it is protection to his brother. So what we have discussed, Adarji, and many of us have told about their view. So one and final view, what I'm going to tell you over here, protection, it doesn't mean that protection of brother and sister. Protection, it means protection of dharma, protection of parinam, protection of sadharmi, protection of our temple, shastra, guru. These are the protection. As Vishnu Kumar Muniraj protected 700 Muniraj, as we must protect to our Jain Dharma. This is the importance of Raksha Bandhan. Now, today we have to discuss on Gatha number 6. We started it, Gatha number 6 on Samay Sar. So, what was the matter in Gatha number 6? ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। So, as you know that we are talking about soul. Whole Samay Sar will tell you about soul only. We can say that Samay Sar is the granth of soul management. Soul management, it means how you can understand your soul, how you can manage your thoughts about soul. Because what we see that from one point of view, here in the Gatha number 6, what Acharya Kundkund is saying that Atma neither Pramatta Gunasthan Varti, neither Apramatta Gunasthan Varti, but Atma is only Gyayak. He is only Gyayak. But what we see in present scenario that no Saurabhji, I am Purush, I am Stri.
I am Balak, I am Vridh. So how is it possible? I am only a Gyayak Bhav. Is it possible? From point of view of Nischay, Acharya Kund is just explaining us that Atma is only Gyayak Bhav. So whole Samaysar will talk only from the point of view of Nischay, but as well as it will explain time to time about Vyavharne. You know what soul management is it? Soul management is, it means this Samaysar is going to tell you about the real soul, what you have not known so far. What we are thinking since the time immortal, we are thinking that I'm not pure soul. I'm having bad habits. I'm thinking in bad way. How will just how would I be God? Is it not possible? But Samaysar is telling no. Have patience and listen carefully. What Acharya Kunkun is saying that have patience and listen carefully. By nature, you are Gyayak. Gyayak, it means जो केवल जानता है वो ज्ञायक. आप करता नहीं है, आप मात्र ज्ञायक है. So Pramatta Pramath, I told you in last session that Pramatta Gunisthan, 6th Gunisthan, Apramatta Gunisthan is 7th Gunisthan. So these Gunisthan are called the Gunisthan of Muni. Acharya Kunkun here is saying that if you consider soul as a Muni Pariyaya, as a Pramatta Gunisthan, as a Apramatta Gunisthan, that is not truth. So what is truth? You are only Gyayak. You are only Gyayak, it means you have nature to know, not to get title of anything. In Hindi, I'm going to tell you something in Hindi. पर पदार्थों और उनके भावों से भिन्न होने के कारण ये आत्मा ज्ञायक भाव रूप सदा शुद्ध ही रहता है. फिर से बोल रहा हूं मैं, पर पदार्थों और उनके भावों से भिन्न होने के कारण से ये आत्मा सदा ज्ञायक भाव रूप से और शुद्ध ही रहता है. फिर भी जब तक ये ज्ञायक भाव को पहचानता नहीं है, तब तक वो उस शुद्धि का लाभ पर्याय में प्राप्त नहीं कर पाता है. Until and unless this soul doesn't recognize himself that I am pure soul, till then he cannot realize himself. अतीन्द्रिय आनंद की कणिका कब जगती है? कणिका इट मीन्स कण, समय, विषय. अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जब जगती है, जब ये जीव मिथ्यात्व को छोड़कर, उल्टी मान्यता को छोड़कर अपने आप को मात्र शुद्ध मानता है, अपने आप को समस्त विकारी पर्यायों से भिन्न मानकर, विकारी पर्याय और परद्रव्यों से भिन्न मानकर अपने आप को मात्र ज्ञायक मात्र जानता है, उस समय इस जीव को आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त होता है. So this soul is ignorant. Since time immortal, no one is there who can tell us, who can tell this soul. There is a bhajan, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा. आप अपना घर भूल गए. You know this medical science, you know about medical science, and what medical science says that you have unlimited capacity to learn anything. मैं ऐसा बोलता हूं सब लोगों को, आप लोग जानते भी हैं कि जब कोई कहता है ना कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विषयों में स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकता, ये सेंटेंसेस पता है, ये सेंटेंसेस गलत है. ये आपको बहुत सारे केसेस में मिलेगा कि ये सेंटेंस गलत है. एक व्यक्ति कई सारी चीजों में स्पेशलाइज हो सकता है, कई सारी चीजों में दक्ष हो सकता है. वो अगर वहां जिस क्षेत्र में पुरुषार्थ करे, उस क्षेत्र में वो स्पेशलाइज्ड होगा, दक्ष होगा और वो वैसा काम करेगा. लेकिन एक सामान्य सी परिभाषा बता दी गई. ऐसे ही what the common people says, what the common world just says to us, this common world is surrounding to us.
usually common world, common people, what they say that you are not pure soul. But here what Acharya Kunkund is saying that until and unless you just do not remove the mithyatva granthi, the mithyatva, and you just realize yourself as a pure soul by removing the conception, by removing the concept of I am not mithyatva gun sthanvarti, I am not pramatya gun sthanvarti, I am not apramatya gun sthanvarti. You cannot achieve samyak darshan. So this is the matter of Gatha number 6. Now one question arises, जब आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी जब व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है, यहाँ ये कह दिया कि मैं प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, तो ये अशुद्धि का जनक है। आपने कह दिया आप इसको भी छोड़ो, आप अपने आप को ना तो मुनि मानो, ना श्रावक मानो, ना छठे गुण स्थान वाला हो, ना छात्वी गुण स्थान वाला मानो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहोगे मैं दर्शन वाला हूँ, सम्यक दर्शन वाला हूँ, सम्यक ज्ञान वाला हूँ, सम्यक चारित्र वाला हूँ, तो क्या ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्या? ठीक है, मैंने मान लिया आपको, आप जो कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञायक नहीं, तो आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, तो फिर क्या मैं ऐसा नहीं बोलूं कि मैं सम्यक दर्शन वाला हूँ, सम्यक ज्ञान वाला हूँ, सम्यक चारित्र वाला हूँ? क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो ये भी कहना असत्यार्थ होगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड इन गाथा नंबर 7। एक चीज याद रखिए, समय सार ग्रंथ धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाएगा, तो उसमें सारे भेद धीरे धीरे हटा के और एक अभेद आत्मा तक पहुंचाने का हर गाथा का लक्ष्य रहेगा। The target of every gatha is only to explain soul, soul of none other than but your soul, not soul of your neighbor, not soul of your family member, soul not in common, but soul in a particular individual. So you must listen this Samaysar by having this thought that it is matter what Acharya Kunkun just telling us. It is the matter of it is the matter related to me, but and not there's no use of others. Now Gatha number 7. I'm just reading from here. Saurabhji, pramat, apramat, what is that? Gunisthan. There are 14 Gunisthan, and Yeah. Pramat is it's a 6th Gunisthan. Apramat is a 7th Gunisthan. Okay, what, just, can you tell me a little thing, like, what does it mean, like, pramat and apramat? Okay, so you know, we are in Pratham Gunisthan, which is called Mithyatva Gunisthan. Once this person realizes his soul when he is living in domestic life, so when firstly this Mithyadasti, when he realizes soul, is called Opshamik Samyak Drasti. Opshamik, it means a person who has realized his soul once in the life of his immortal journey. अनंत काल में जो जर्नी कर रहा था, पहली बार उसने वो प्राप्त किया है। तो अगर कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके किसी का छूट गया हो और उसे फिर से वो रियलाइज करता है, तो उसे भी प्रथमोपशम बोलते हैं, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। तो गुणस्थान ऑफ दैट प्रथमोपशम सम्यक दर्शन इज 4th. Then he just continues to realize his soul. Gunasthan increases and he achieved 5th Gunasthan. So what we just discussed in Chaydhala about 11 Pratima, Brat, 12 Brat. So it is followed by Deshvrati. Deshvrati, it means in 4th Gunasthan, he was not following any Brat. He was just quite a simple person, but he was Samyak Drishti. In 5th Gunasthan, he is following many Brat. That's why it's a Gunasthan of Desh Brat. Desh Brat, it means partially
Brat he is following. And sixth Gunisthan is a quite just a different Gunisthan, because in till fifth Gunisthan he is having Grahasth Avastha. पांचवें गुणस्थान तक वो गृहस्थ रहता है और छठवें गुणस्थान से मुनि हो जाता है, या यूं समझो जब मुनि होते हैं तो उनका छठवां गुणस्थान होता है। तो मुनिराज या तो उनको शुभ भाव होंगे या शुद्ध भाव होंगे। तो जब उनको आत्मा की अनुभूति होगी, उस अनुभूति के काल में उनका जो गुणस्थान होता है उसे बोलते हैं सातवां गुणस्थान। और जब अनुभूति नहीं होती, वो ग्रंथ लिख रहे होते हैं, भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं, शावकों को उपदेश दे रहे होते हैं, संघ का संचालन कर रहे होते हैं, ये सारी जो शुभ क्रियाएं हैं ये कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रमत्त गुणस्थान, छठवां गुणस्थान। प्रियंका जी, इज इट क्लियर? Yes, yes, Saurabh ji. So, और फिर उसके बाद तो और आगे की गुणस्थान है। आत्मानुभूति वाले काल में इट इज 7th गुणस्थान, और जब वही मुनि जब आई मीन आत्मानुभूति के अलावा कोई क्रियाओं में प्रवर्तन करते हैं, शुभ क्रियाओं में प्रवर्तन करते हैं, शुभ क्रिया में जब प्रवर्तन करते हैं, तब वो छठा गुणस्थान होता है, उसका नाम है प्रमत्त गुणस्थान, राइट? हाँ बराबर। तो आचार्य कुन यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि ये जो आत्मा है ना, ये प्रमत्त नहीं है, ये गुणस्थान वाला नहीं है, ये गुणस्थान वाला नहीं है। अगर आप इसे गुणस्थान वाला कहोगे ना तो पहचान नहीं पाओगे इसे आप, और हम उसे ना अशुद्ध नहीं की कैटेगरी में डालेंगे। That's why आचार्य कुन is telling us that please घड़िया नीचे पाड़े तो શું થાય? It's not that. तो आचार्य कुन यही कहना चाहते हैं कि ये आत्मा अगर गुणस्थान वाला कहोगे तो हम उसे व्यवहार से कह सकते हैं, अशुद्ध नहीं से कहेंगे, लेकिन आत्मा तो ज्ञायक है, वो मात्र ज्ञायक है, ऐसा यहाँ बताना चाहते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन ऐसा आया कि ठीक है, आपने कहा कि ये आत्मा ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, ज्ञायक है, हम समझ गए, लेकिन अगर जब आत्मा को हम बोलेंगे कि आत्मा सम्यक दर्शन वाला है, सम्यक ज्ञान वाला है, सम्यक चारित्र कहने वाला है, तो फिर ये वाली बात भी असत्यार्थ हो जाएगी। लेकिन कहते तो हैं ऐसा कि ये आत्मा सम्यक दर्शन वाला है, सम्यक ज्ञान वाला है, सम्यक चारित्र वाला है। As a result in answer, Acharya Kunkund is just writing 7th number Gatha. I think matter is clear to all. If any question you are having, please you can ask in Hindi, in English, whatever you want. But this is very important topic and Granth what we are studying. Okay, Kunjanji, do you want to ask anything? Saurabh, one question I had was if someone is on a fourth Gunsthana and can he have this Shuddha Bhav? Yeah, because he realizes his soul. That's Right. why he is in fourth Gunasthan. Mithyadrishti, you know, what is the definition of Mithyatva Gunasthan and fourth Gunasthan? Mithyatva Gunasthan, it means he is having ulti manyata and he has never realized his soul. Once this Atma realizes soul, so Gunasthan of that person is fourth Gunasthan. Okay, Saurabh. And Saurabh, one During more the thing. time of Atmanubhuti only it is fourth Gunasthan, or like full time, like when he's in I mean Bhav also. No, और वो उसका चौथा गुणस्थान बना रह सकता है। अगर औपशमिक सम्य दर्शन है तो औपशमिक सम्य दर्शन का काल है अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा औपशमिक सम्य दर्शन नहीं रहेगा। छायिक सम्य दर्शन जो होता है वो परमानेंट रहता है, वो कभी नहीं जाता है, तो वो या तो शुद्ध केवली या केवली के पाद मूल में ही होगा। छायोपशमिक सम्य दर्शन है, छायोपशमिक सम्य दर्शन है तो वो बना रह सकता है, और वो बना रहेगा तो वो चौथे गुणस्थान में ही रहेगा। सौरभ जी, तो फिर तो तो चौथे से पांचवे जाने का जो गिना जाएगा उसमें व्रत ऐड हो जाएंगे, राइट? शिक्षा व्रत या दीक्षा व्रत। हाँ बराबर है। एक्चुअली में वो इंटेंसली ही इज नॉट इंटेंसली जस्ट एडिंग ब्रेथ। क्या होता है कि हर व्यक्ति प्रोग्रेस चाहता है, हम लोग भी ग्रोथ चाहते हैं,
भले हमारी नौकरी हो या व्यापार हो. You know, it's a nature. It's a nature. Every element of this world, it required growth. For example, हम एक बीज बोते हैं, वो बीज भी ग्रोथ चाहता है, और वो पहले पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल लगाता है, ऐसे कि बढ़ता जाता है. ऐसे ही एक सम्यक दृष्टि, when once he realizes soul, prathmopsham samyakt, then that prathmopsham samyakt converts into kshayup samyakt. Kshayup samyakt samyakt. Now he will remain samyak dृष्टि. So he is not so frequent in self-realization. He wants more frequency because he has just tasted, once he has tasted the soul, realization of soul. Now in more frequently he want to realize his soul. As a result, वो बाहर से हटता जाता है, वो धीरे धीरे व्यापार छोड़ता जाएगा, धीरे धीरे घर में व्रती होता जाएगा, धीरे धीरे परिग्रह को कम कर लेगा, धीरे धीरे सलाह देना कम कर देगा. तो वो आत्मा का अनुभव का काल बढ़ाना चाहता है, बाहर में क्रियाएं अपने आप आती है. कुंजन जी, is it clear? Yeah, yes, Saurabh. And at the same time, someone being at the fourth Gunsthana, what I wanted to say was, it doesn't mean that he's not following some of the vrat, but they are still at a study level पे हो रहा है वैसा, right? नहीं 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 नहीं, देखिए वो जो चौथा गुण स्थानवर्ती भी है ना, he is also क्वाइट संयमी. मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी गाली देता हो, घूम रहा है, ही इज ड्रिंकिंग, अभक्ष पदार्थों का भक्षण कर रहा है. अन्याय, अनीति और अभक्ष और 7 व्यसन, इनका त्यागी तो होता ही होता है. वो अन्याय, अनीति, अभक्ष और 7 व्यसन, इनका त्यागी हो गई होगा. लेकिन 5वें गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा उसको कहा जाता है वो अव्रती है. सो व्हेन वी कंपेयर फ्रॉम 5th गुण स्थान, we say he is a brati, but when we compare from first Gunisthan, he is brati. He is following many things. He is just following anyay. He is not doing anyay, aniti, abhaksh, and he is quite free from sapte vasan. Saurabh, thank you. I wanted to kind of clarify that the vrats are always been kind of part of it. बट वो क्या होता है, दिखता है. मतलब 5वें गुण स्थान में वो व्रती दिखने लगता है, 4थे गुण स्थान में व्रती दिखता नहीं है. होता तो है, सामान्य रूप से पालन करता है, लेकिन वो दिखता नहीं है. अब 5वें में तो वो क्लियर दिखाई देने लगा कि ही इज व्रती. सो इज इट क्लियर फॉर ऑल? गाथा नंबर 6, आदर्श जी, इज इट क्लियर? You know, it's very serious topic. Samay-sar is very serious granth, and once we just understand this granth, you will realize that what achievement you have got. Samay-sar is not a granth which can fulfill, which can tell you about this universe, about how just you can handle your family affairs. But Samay-sar is only granth which is clearly and only in about one thing, which is telling the name of that thing is soul, and soul is my soul, not other soul. Now we can start Gatha number 7. I'm reading first. I'm reading from here, then you can. Vavaharenu vadissadi Ranis charit dansanam ranam Ranaviranam na charitam na dansanam janego suddho. Again I am reading, listen carefully, then you can read. Vavaharenu vadissadi Ranis charit dansanam ranam Ranaviranam na charitam na dansanam Janago Suddho. Okay. Now you just all can read. Vadissati Sasi
नानि चरित दंसनं नाणं नवीनानं न चरितं दंसनं शुद्धो। गुड। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो संसार की सबसे प्राचीन भाषा को पढ़ रहे हैं। इट इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें भी हम समय सार पढ़ रहे हैं। स्पीच थेरेपी भी है, यू नो। ये जो प्राकृत भाषा है ना, स्पीच थेरेपी है। आपके बोलने के जो शब्द है ना, ये बहुत सही हो जाएंगे। बोलने का आपका जो स्टाइल है वो और सफिस्टिकेटेड हो जाएगा। सो अब मैं एक एक से पढ़वाता हूँ। प्रीतेश जी आप पढ़िए इसको, एक एक करके सब लोग पढ़ के बताएंगे मुझे, बिकॉज इट्स अ पर्सनल क्लास, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कॉमन क्लास, पर्सनल क्लास, देन आई विल पे अटेंशन पर्सनली। प्रीतेश जी। एक मिनट, सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। या व्यवहारे नुवदिस्सदि राणिश्चरित दंसनं नाणं रविराणं न चरितं दंसनं जागो शुद्धो। एकदम सही पढ़ी, शुद्ध पढ़ी आपने प्रेरित जी। जो शुद्ध नहीं पढ़ेगा मैं उनका सुधार कर दूंगा, लेकिन इसमें गाथाओं में शुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। आदर्श जी आप पढ़िए। व्यवहारेणुवदिस्सदि नाडीश्चरितदंसनं नाणं न वीणानं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। वेरी गुड, एक भी अशुद्धि नहीं है, सही पढ़ी आपने। अमी जी मेहता, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन रीड। Okay. व्यवहारेणुवदिस्सदि नाडीश्चरितदंसनं नाणं न वीणानं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। गुड गुड, अमी जी ने भी सही पढ़ी। थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको कम दिख रहा था, लेकिन फिर भी आपने शुद्ध पढ़ी। गुड। अर्पित जी। यस सर, जय जिनेन्द्र। जय। व्यवहारेणुवदिस्सदि राणिश्चरितदंसनं नाणं न वीणानं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। ओके, वन वर्ड, व्यवहारेणु वदिस्सदि। आप इसे फिर से पढ़िए। व्यवहारेणुवदिस्सदि। हाँ, आधा सा है वो आधा पढ़ा जाएगा। व्यवहारेणु वदिस्सदि। व्यवहारेणुवदिस्सदि। ओके गुड। बीजल जी। व्यवहारेणु वदिस्सदि नाडीश्चरितदंसनं नाणं रविराणं न चरितं दंसनं जाणगो शुद्धो। णा दंसणम जाणगो हो। ओके, सही पढ़ी आपने। कुंजन जी आप पढ़िए। वहवारेणुवदिस्सदि राणिश्चरितदंसनं नाणं न वीणानं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। गुड, एकदम सही। मीनल जी। व्यवहारेणुवदिस्सदि राणिश्चरितदंसनं नाणं न वीणानं न चरितं
न दंसनम जानको सुद्धो। ओके, बढ़िया। प्रीति जी। व्यवहारेणो वदिष्यति राणिस्सचरितदंसनं राणं नवीणानं नवीणानं न चरितं न दंसनं जानको शुद्धो। गुड। प्रियंका जी। व्यवहारेणो वदिष्यति नाणीसचरितदंसनं नाणं नवीनानं न चरितं न दंसनं जानको शुद्धो। बढ़िया, ठीक पढ़ी। सौरभ जी। व्यवहारेण वदिष्यति प्राणिश्चरितदंसनं प्राणं नावीराणं न चरितं नादंसनं जानको शुद्धो. Very good. It is the matter of pleasure for all of us that almost you have just read this gatha in a proper manner with proper uchcharan. Vavharenu badissadi ranis charit dansanam ranam ranaviranam na charitam na dansanam janako suddho. You know, these are like mantras. Every gatha like mantra, and the mantra which will be helpful for us to achieve our ultimate goal, which is salvation, which is permanent happiness. So this gatha also revealing some secret about our soul. The secret is that दृग ज्ञान चारित जीव के यह कथन है व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से. So remember, in the ending of gatha number 6, what I told you, that there is a one question कि अगर जब आत्मा को प्रमत्त अप्रमत्त कहना भी जब आपने व्यवहार कह दिया और अशुद्धि है वो, तो जब हम आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र वाला कहते हैं तो क्या वो भी असत्यार्थ होगा क्या? As a result, in an answer, Acharya Kunkun has given answer in forms of in terms of 7th number गाथा. दर्शन ज्ञान चारित्र जो जीव के हैं ये व्यवहार ने से कहा गया है, क्योंकि शुद्ध आत्मा ना तो दर्शन वाला है, ना ज्ञान वाला है, ना चारित्र वाला है, वो तो जैसा है वैसा ही है, अर्थात शुद्ध है. So first we can read it in Hindi, in English. Kunjan ji, गाथा number 7. हाँ सर. Okay, it is. Dr. Adarsh, please read it. Gatha number 7. जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ना. वही. Conduct, faith and knowledge have been said to be the attributes of the knower, the self, from the empirical point of view. Vyavhar nay. From the transcendental point of view, Nishchay nay, there is no knowledge, conduct or faith, just pure consciousness. Okay, so in short or only meaning of Gatha, what here in English, conduct, faith and knowledge have been said to be attribute of a knower, the self from the व्यवहार point of view. So the ज्ञान चारित्र जो जीव के कहे जाते हैं ये from the point of view of व्यवहार नय, but from the transcendental, it means from निश्चय point of view, there is no knowledge, conduct of faith, just pure consciousness. आत्मा के ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है. इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, अभेद में आनंद है, भेद में विकल्प है. अभेद में निर्विकल्प है, भेद में विकल्प है. आप लोग याद होगा, हम आप लोगों में से पहले कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा समय सार पढ़ने के पहले, जब हम छेड़ाला आदि पढ़ रहे थे, कि आत्मा की अनुभूति के समय सोचा क्या जाता है, व्हाट वी कैन थिंक, हम क्या सोचें. तो मैंने आपको उस समय बोला था कि
ये जीव अपने स्वभाव को जानकर अपने बारे में सोचता है, वही आत्मा की अनुभूति में सोचा जाता है। और जब ये सोचते सोचते जब निर्विकल्प हो जाता है तो वहां तो सोच भी खत्म हो जाती है, मतलब फिर वहां सोचता नहीं है, ऑटोमेटिक आत्मा का आनंद होता है। और यूजुअली एक मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि वो किसी ने आम का रस बनाया और उसमें किसी ने पूछा कि प्लीज टेस्ट इट एंड व्हाट यू फील अबाउट केशर एंड नाउ व्हाट यू फील अबाउट शुगर। सो स्पेशली हम उस टेस्ट को पहचानते हैं, अच्छा शक्कर ठीक है, अच्छा केसर ठीक है। लेकिन जब हम पूरे आम के रस का रियलाइजेशन करते हैं तो हमें कोई भेद नहीं होता, अभेद हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव है ये कि मैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं भेदात्मक, यू आर मेडिटेटिंग एंड यू आर थिंकिंग ओके आई एम दर्शन वाला आत्मा, आई एम ज्ञान वाला आत्मा, आई एम चारित्र वाला आत्मा, इट इज कॉल्ड विकल्पात्मक ज्ञान। But how you can know your soul, how you can realize your soul, Acharya Kund is saying, when you will just be aware about this fact that Atma is neither darshan gyan charitra. If it is said in some granth at some places, so it is from व्यवहार point of view. व्यवहार से कहा है, लेकिन व्यवहार असत्यार्थ नहीं है। निश्चय नहीं की अपेक्षा तो व्यवहार को असत्यार्थ कहा जाता है, लेकिन व्यवहार ने अपने आप में पूर्ण सत्यार्थ है। तो व्यवहार ने का नेचर ही यही है, उसका नेचर ऐसा ही है, वो ऐसी बात करता है, वो भेद बात करता है, वो भेद करके कथन करता है, एक वस्तु में भेद पैदा करता है या अलग अलग वस्तुओं को मिला के कथन करता है। लेकिन निश्चय ने से देखें तो सोल कैसी है, आत्मा कैसी है, तो यहां बता रहे हैं ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक। From the transcendental point of view, from Nischayana, there is no knowledge, conduct of faith, just pure consciousness. ये एक प्योर आत्मा ही है और कुछ भी नहीं, ऐसा आचार्य कुंद ने ये 7 नंबर की गाथा में कहा है। Surabhi, I have a question. So can we say that during the time of Atmanubhuti or self meditation, self realization, so there is no thinking like you mentioned, but it is a pure observation of our own pure consciousness, Shuddhatma. It's pure observation, nothing, no thinking as such, I am Atma or I am Gnan, I am Darshan, I am Shuddha, anything like that. It's just the pure observation with the complete extrasensory pleasure, non-sensory pleasure. Yeah, of course it is. You know, it is the state where there is no vikalp. जो विचारधारा है वो तो विकल्पात्मक है ना, आत्मानुभूति निर्विकल्प कही जाती है. But from the perspective of our attention, right? Like normally, like when we are watching TV, our attention is towards TV, which is towards a sensory object. Now here, that attention will be focused, or would be an observation would be towards of our own Atma. Is that correct? हाँ, वो विकल्पात्मक, देखिए निर्विकल्प तक पहुंचने के लिए विकल्प होना आवश्यक है. हाँ. विकल्प होंगे, है ना, निर्विकल्प तक पहुंचने के लिए विकल्प होना आवश्यक है. हाँ. नहीं, वो एंड में जब हो जाता है, वहां पे पहुंच जाता है, तब वो स्टेट कैसा होता है वो समझने का ट्राई कर रहा हूँ. वो निर्विकल्प है. निर्विकल्प इट मींस कुछ सोच नहीं रहा है. हाँ, सोच नहीं रहा है, बट ऑब्जर्वेशन तो चालू है, राइट? जो अपना आत्मा का ऑब्जर्वेशन है. हाँ, देखिए एक बड़ा मैच्योर एग्जांपल, it's a quite mature example what we find in Granth ki at the time, what is the if anyone asks how we can understand Atmanubhuti, so very mature example what you can find in Granth. You know, at the time of sexual intercourse, what is the time, culmination time? That is, it means that time no one can think anything. The time only remains 2 or 3 minutes. More than it may be more than 2-3 minutes or 1 minute. So Acharya says that when you realize your soul, the time may be less, but you have no thought, no vikalp. बिना विकल्प, विकल्पात्मक जो होता है वो होता है आपका सोच होती है, वो विकल्प है.
आत्मानुभूति निर्विकल्प है। इट मीन्स सब चीजों से, सेंसरी प्लेजर से, सेंसरी अटेंशन से, सबसे दूर चला गया। और आएगा, इसमें धीरे धीरे आंसर देते जाएंगे इस चीज का, इसका आंसर मिलेगा धीरे धीरे कि हाउ एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन व्हाट इज एक्चुअल प्रोसेस, व्हाट ही थिंक्स, मतलब सोचता तो है ही नहीं वो, निर्विकल्प कैसे होता है। Saurabh ji, this is very extraordinary Gatha, because most of the time our concept of pleasure is from the sensory objects, right? We either watch TV, go out, do something, eat something, or we want to be doing something to think and if we don't get to do something, and this is even prevalent in kids, if they don't get to do anything, they feel bored, they feel sad. तो ये बहुत common है. Now we are saying that we have a very powerful way to be in a pleasureful state, completely and obtain pleasure even without doing anything. Yeah. Without getting help of other elements. Usually what we think that if there is no element, how can I get happiness or pleasure? But Yeah. here Acharya Kunkun is saying that you yourself can get utmost enjoyment Yes. by realizing your soul. And this also seems to be like the whole core of Jain philosophy, because normally when people talk about Vrat, Tap, Upvas, and they don't know about this core philosophy, they find it very boring, and they find Jain religion as a restrictive religion, that you are trying to restrict everyone's life and activities, and it cannot be sustained. People won't like it because you're restricting them. But now it's more like you're empowering them with something so powerful that they don't need all those things, and they gradually and willingly give up all those things. Yeah, absolutely right. That if someone is just following breath, etc., so he may get bored, and even other can think that this religion is a religion of restrictions. But here, what Acharya Kunkun is clarifying, it is not the religion of restrictions, but it is the enjoyment. Enjoyment not from others, not from outer source, but you can get enjoyment from your soul. Really wonderful. Acharya Kunkun is just stating here. Saurabhji, one question I had was when you reach that stage, and you always like at that stage you are nirvikal. And the next time again when you come back, or would you come back? And if you come back, does it happen through the same way of having vikalp and then becoming nirvikalp, or again? Yeah, nirvikalp time is very short. Maximum time you'll have to vikalp. But vikalp related to soul only. जैसे किसी ने अमृत का स्वाद चखा हो ना, तो वो हमेशा विकल्प किसके करेगा? उसी के करेगा ना, वो तो उसी के सारा प्रयास किसका रहेगा? उसी का रहेगा प्रयास। तो ऐसे ही वो विकल्प करेगा, लेकिन सारे विकल्प निर्विकल्प होने के लिए रहेंगे। उसका टारगेट क्या रहेगा? व्हाट विल बी द टारगेट? टारगेट टू रियलाइज हिज सोल। Kunjan ji, is it clear? Yeah, yes, Saurabhji. And as Parade said, yeah, this one, like this Gatha is kind of like explaining everything in like one sentence. Saurabhji, one thing I was thinking was from 6 to 7, when we go from saying it's pure consciousness, we go to 7th and we say now we are trying to also go deeper. So we are trying to kind of explain that not even from knowledge, conduct, or faith point of view, there is again, the reason for 7th is just to explain between Nishchaya and Vyavahar. Yeah, but Acharya Kunkun also just telling about the Atmanubhuti. One thing, till 12th Gatha, after 12th Gatha, Acharya will say, or here in Tika you will find those who are intelligent. So 12th Gatha are sufficient for self-realization. Those who are intelligent, they can understand the core of Jainism or core of Acharya Kunkun. If you are having Madhyam Buddhi, then you can go ahead. उसके बाद फिर और आगे पढ़ना हो तो जघन्य बुद्धि, मतलब अगर आपकी बुद्धि तीव्र है तो आचार्य कुंकुन की 12 गाथाएं पर्याप्त है उसको समझने के लिए.
Okay, so I hope I hope हम सब लोग जैन धर्म का कोड समझेंगे और we are so fortunate that individually in personal class we are discussing Samay-sar. Usually people listen Samay-sar in just a common way, listening pravachan, but it's a very rare incident when someone is teaching you and you are just listening Samay-sar on individual level. Because Samay-sar is a so wonderful and marvelous Granth. After finishing, your whole thought will change. Even Moksha Prakashak, when we will finish it out, both Granth, it will change your thought. It may change your world. It may change everything, and you will have another life. You will feel as the greatest achievement of a life is to study this Granth. Okay, now it is time to close our class today. For today, जिनवाणी स्तुति लेते हैं हम लोग. सौरभ जी, हाँ, सब लोग एक साथ बोलिए जिनवाणी स्तुति, एक साथ सब लोग. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवाणी माँ को वंदनाशत बार है. Just to everyone, I shared the video for what Saurabh ji and Gaurav ji have made for Samay-sar. Just for my personal experience, I keep that video on and keep on listening to it, and it gives me more, just more depth or questions about the Samay-sar. So I would encourage everybody to keep on watching the videos at least. Okay, जय जिनेंद्र सभी को. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.